नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं शारदा हॉस्पिटल पे हूं और अभी हमने एक लाइव ऑपरेशन देखा, ब्रोंकोस्कोपी। हाँ, ब्रोंकोस्कोपी। मेरे साथ में डॉक्टर मनीष, तो मैं पहले भी इनका इंटरव्यू ले चुका हूं और काफ़ी कुछ बता चुके हैं। तो फिर से हम जो ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसके अलावा एक जर्मनी से गेस्ट हैं जो मिस्टर स्टीफन गिले, उनसे भी थोड़ा सा पूछेंगे कि वो उनका आने का मकसद क्या है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो डॉक्टर मनीष बताइए। डॉक्टर मनीष, स्वागत है आपका। थैंक यू हरे कृष्णा। मनीष, आपसे मिलके मुझे दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत खुशी हुई। सो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है मनीष, जैसे मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, ब्रोंकोस्कोपी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जी। और ब्रोंकोस्कोपी ऑपरेशन नहीं है। बेसिकली जो पेशेंट्स हमारे आईसीयू में आते हैं, जो बहुत गंभीर होते हैं, जो बहुत सिक होते हैं, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, लंग्स में कंजेशन है, लंग्स में इन्फेक्शन है, उनमें एक प्रणाली है जिसके थ्रू हम असेस कर पाते हैं और ट्रीट कर पाते हैं कि लंग्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मरीज ठीक नहीं हो रहा। Right? So basically bronchoscopy gives us the advantage to understand our patient well and to treat our patient well. That is where the bronchoscopy role is there in the today's evidence-based critical care medicine. And obviously देखिए, कोई भी मिशन, मैं आपको बताऊं मनीष, उसमें तीन चीजों की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो जीवा, एक प्रकृति और एक कालम। ये क्या मतलब होता है? जीवा मतलब इंसान क्या चाहता है, बिल्कुल। प्रकृति मतलब what do the people they want, right? So that environment has to be favorable. And third, काला, काला means time. अगर टाइम ही अच्छा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। So basically जीवा, हमारी इच्छा बहुत अच्छी है कि हमें आगे करना है और पेशेंट्स को हेल्प करना है। And to support us we have Mr. Stephen Gille from Germany. He's a clinical customer care support and he has been instrumental in establishing this project in this country. Mr. Maute and Mr. Stephen, Dr. Tushira, they were the keen most important KPIs who has helped us in establishing this procedure for the sickest of the patient. In fact, मैं अब आगे मैं काफी बारी आपसे बात कर चुका हूँ। मैं चाहूँगा Mr. Stephen Gille should share his experience, that what his experience has been there with us. Mr. Stephen. On behalf of Richard Wolf, which is a manufacturer of flexible bronchoscopes and camera systems, first of all, I want to be very thankful for having me here, for giving us the chance to support these center of excellence and also this training center. Second, what I saw here today was very much impressive. And the job of Dr. Bharti, which is doing here, is really, really excellent. And so therefore, we are looking forward for fruitful collaboration in the near future. Great. Thank you. So thank you, Mr. Stephen. Thank you for sharing your kind words. But it will be incomplete because if I don't acknowledge the efforts of Dr. Ramurthy Sharma, he's the person, head of the department, professor, critical care medicine. Actually, this process was started under his vision. Great. So maybe, I speak better, so maybe I have to speak. But if you ask me, Dr. Ramurthy Sharma, Dr. Ankit, they were the key people who helped me in initiating this project. And I always used to catch hold of him. That Dr. Sharma, we have to develop this project, and obviously Ankit has supported us very well. So we are basically the team of people, and you cannot make it happen unless and until I have a support of Mr. Ansari and the nurses like Mr. Anil, Mr. Ravinder, Mr. Gajinder, Mr. Salman, Girish, who has been instrumental in establishing this project, and obviously the doctors. बिल्कुल। How will you do any skill? आप कैसे करेंगे जब उसको देखने वाला, उसको समझने वाला आपके साथ है? बिल्कुल सही बात है। हम जिस भी चीज के लिए कर रहे हैं, डेफिनेटली उसके दो मेजर कारण हैं। एक, आपके मरीज ठीक हो, और यही टेक्निक्स, यही स्किल्स should be transferred to the new generation. बिल्कुल। So that कल को अगर मैं सिक होता हूँ तो मुझे कौन ब्रोंकोस्कोपी करेगा? So they have to help me, right? So this is what is our mission. So thank you Manish. मैं यही कहना चाहूँगा with folded hands, हरे कृष्णा। जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं एक और लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। जो पेशेंट को प्रॉब्लम थी, जिसका आप ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो वो किस वजह से हुई, एक बार थोड़ा सा अगर बताएं तो। सो मनीष, देखिए, कोई मरीज होता है जो हमारे अभी जिसमें हमने ब्रोंकोस्कोपी किया है, इस मरीज में एक डिजीज था जिसे कहते हैं COPD। COPD ऐसा एक डिजीज है जो क्रॉनिक स्मोकर्स, जो बहुत लंबी
धूम्रपान, smokers, basically the chronic smokers. So धूम्रपान, yes. So जो ये करते हैं उनमें ये डिजीज डेवलप हो जाता है. बेसिकली उनमें डैमेज होता है, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन इतना एक्सटेंसिव होता है कि उसके बाद उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ये मरीज आए थे हमारे पास, एक डिजीज जिसे बोलते हैं एक्यूट एक्सेजर्बेशन ऑफ COPD. यानी वो जो दमे की बीमारी है वो जब ज्यादा वर्स हो जाती है, इन्फेक्शन आ जाता है, जैसा मौसम है, ठीक है, इसमें इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, वेंटिलेटर पे आए. अब ऐसे मरीज दे आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. व्हाई? बिकॉज इन्फेक्शन रिमेन्स इन देयर लंग. आपके लंग्स में भी दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत है, इसलिए सांस की मशीन लगी है, ठीक है. अब लंग्स में इन्फेक्शन है, मवाद है, पस पड़ा हुआ है, बलगम फंसा हुआ है, हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, ऐसे कैसे ट्रीट होगा? तो आपको पहले बलगम मवाद सारा निकालना है बाहर पड़ेगा. उसके लिए ब्रोंकोस्कोपी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू डू द थेरेप्यूटिक, the advantages for these patients. So बलगम जब निकलता है तो पेशेंट का एयरवे, जो लंग्स है, सांस है, वो खुलता है, और साथ में फिर एंटीबायोटिक्स है, तो बल्ले बल्ले. तो इस तरीके से हम अपने मरीज के लिए हेल्प करते हैं. चलिए, ग्रेट, ठीक है, बहुत अच्छा लगा. हाँ, प्लीज थोड़ा सा इधर आए तो. जी. मैंने इतनी जगह, मैं डॉक्टर अंकित हूँ, मैं शारदा हॉस्पिटल में काम करता हूँ, और इतनी जगह मैंने दिल्ली NCR के सारे हॉस्पिटल्स में काम किया, लेकिन इस तरह का जो इस्तेमाल है ब्रोंकोस्कोपी का, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें आगे कैमरा लगा हुआ है, जैसा डॉक्टर मनीष ने बताया कि आप लंग को देख सकते हैं उसमें, सो वी कैन यूज इट एज ए फॉर द डायग्नोस्टिक एज वेल एज फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस. तो आप देख करके उस पर क्या उसमें पैथोलॉजी है, क्या बीमारी है, इस तरह से हम लंग का जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, जहाँ पे कीटाणु पड़े हुए हैं, जहाँ पे बीमारी का सोर्स है, उसको हम निकाल करके जांच के लिए भेज सकते हैं, तो जल्दी से ठीक होने की संभावना ज्यादा रहती रहती है. इस तरह से मरीज को मैंने काफी, डॉक्टर मनीष के साथ, राममूर्ति सर के साथ, मैं 2 साल से यहाँ रह करके मैंने काफी कुछ सीखा है इन लोगों से, और इस तरह से ये मेरी जर्नी यहाँ से शुरू की, एंड आई वांट टू फ्लाई मोर अलोंग विद द शारदा हॉस्पिटल. वेरी नाइस, वेरी नाइस. मैं मनीष एक चीज और कहूँगा, मैं ये क्योंकि एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोगों तक पहुंचते हैं, तो मैं इसमें 2 लोगों के इनपुट्स आपको चाहूंगा. एक, हमारे नर्सेस क्या समझते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है पिछले वो 15, मतलब मुझे 2 साल हो गए इस इंस्टीट्यूशन में, एंड शारदा हॉस्पिटल हैज गिवन अस द विंग्स टू फ्लाई हाई. तो मैं नर्सेस से मैं पूछना चाहूंगा कि इनका कैसे एक्सपीरियंस है. उसके बाद जो हमारे साथ मिस्टर संदीप है एंड सुब्रत, तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस वर्कशॉप में, ये भी मैं जाना, एंड मिस्टर सतीश. ठीक है, हाँ, बुला सकते हैं आप उनको. बताइए गिरीश, कैसा लगा आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा यहाँ पे, मतलब शारदा हॉस्पिटल में, इसके अलावा डॉक्टर मनीष भाटी के साथ? सर के पास हम लोग का ज़्यादा ये ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू से हमको ज़्यादा मिल गया. ज़्यादा एक्चुअली मेरे लाइफ में मेरा एक्सपीरियंस में इधर है, हम लोग ICU में पहले बार ब्रोंकोस्कोपी करना देखा. इसमें से मोस्टली हमको हेयर अचीवमेंट में नया सर ने ऑलरेडी बता दिया, COPD का पेशेंट का उसका टेस्ट का रिगार्डिंग जीनस वेट, ये सब इसका सेक्रेशन, थ्रो सेक्रेशन से देखने में इसमें भी आने के लिए, और नया डायग्नोसिस फाइंड आउट करने के लिए भी हमको यही से मिला. अनिल, आप कुछ कहना चाहोगे? रविंदर? हाँ, ब्रोंकोस्कोपी से सर है बहुत सारा फायदा हुआ है, क्योंकि हम जो पेशेंट वेंटिलेटर पर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा म्यूकस और सीक्रेशन फंसे हुए होते हैं, उनको निकालने के लिए यहाँ पर हमारी क्रिटिकल टीम करती है. लेकिन जो पहले बने हुए थे सेंटर, जैसे यहाँ से दूसरे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था पेशेंट को, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं, अब यहीं पे सब कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं करना. ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे हमारे पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए हमें ये फायदा सबसे बड़ा हुआ है कि यहाँ पर ही पेशेंट को हम इजीली हम यहाँ पर पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं. ठीक है, और हमें अच्छा फायदा हुआ है कि हमारे मरीज ठीक होके जा रहे हैं यहाँ से. बेसिकली आपका फायदा नहीं, मरीज का भी फायदा है. नहीं, हमारा फायदा मतलब मरीज ही है, मरीज हमारा एक फोकस है, मरीज है कि मरीज को ट्रीट करना है. मरीज बेड रोक के जाते हैं, हमें भी खुशी मिलती है. वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू. ये तो बहुत अच्छी बात है, शारदा हॉस्पिटल बहुत अच्छा इनिशिएटिव है. इसके अलावा नो, जस्ट शेयर योर व्यू बिकॉज़ राधे एवरीबॉडी जी. सी टेक्नोलॉजी का काम ही, कमिंग फ्रॉम ए टेक्नोलॉजी फील्ड ना, हम लोगों का काम ही है कि टेक्नोलॉजी कुछ हेल्प करे और पेशेंट स्टे इन हॉस्पिटल रिड्यूस हो. सो this technique is actually reducing the stay of patient in hospital in ICU. Once the stays get reduced, you can treat more patients. So we are we as a country not having that resources, this will help us boost the productivity everywhere. Very nice. Exactly. Mr. Satish, would you like to share something? No, you are coming third, fourth time with us. You should share your experience. Mr. Satish is basically the Indian representative of Richard Wolff Academy. Okay. So the training center which we are running is basically under his custodianship in this country.
So he's one of the very important members. So Mr. Satish, आप अपने experience थोड़ा सा share करें. I'm very impressed. This is my second visit to this Sharda Sharda Hospital, and specifically this training center. I'm really impressed with Dr. Manish, Dr. Sharma, and their team, and really they are doing fantastic. And I'm sure it is what I see last 5-6 months. It is this new technique is spreading all over. Wherever they go, they really get good response from all intensivists, and this is spreading like anything. And we are sure this will spread more and more, and it will help entire our patient community in India with this all sophisticated equipments we are providing them with training and everything. It will eventually help Indian patients. Thank you. Thank you so much. Thank you. So she is the person. She is the DNS. Okay. So deputy nursing superintendent. So she is helping us in carrying out this procedure. So whenever you see some face, there is a tail also. What you are seeing, everybody has a tail. Basically, these are the faces, right? Okay. So these are very important people who has helped us in carrying out this vision and mission. So, would you like to share something? Sir, good afternoon. I'm very happy to hear to tell something about Manish sir and Ramurthy sir, because I was here posted as DNS. मुझे तो ऐसे एक्सपीरियंस मिला यहाँ पे आने के बाद में कई प्रोसीजर मैंने इनको बोल दी थी मुझे बुलाओ, मैं तो पूरा ICU का अलावा वार्ड देखती हूँ, लेकिन ये मुझे मेरे ये इसमें ब्रोंकोस्कोपी जो करते हैं उसमें जो सीखने को मिलता है उसी टाइम सर जो हमको सिखाते हैं, और रामूर्ति सर और मनीष सर, और तो मुझे तो बहुत सारे मिलने के मुझे 30 इयर्स एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे ब्रोंकोस्कोपी बहुत अच्छा है, सर जो इस तरीके से करते सिखाते हैं, इसलिए बहुत ये अच्छा हुआ, अच्छा है, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे यहाँ पे सीखने के लिए मिला। पर पेशेंट इतना सारा सर्वे होके जाते इसका ये ब्रोंकोस्कोपी करा के उनको जी होते हैं, इसलिए मेरा हम वेरी हैप्पी। थैंक यू मनीष, थैंक यू फॉर कमिंग एंड टेकिंग अस। थैंक यू मनीष, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं मनीष कुमार, इनको खबर 24 एक्सप्रेस के लिए अंसारी। And obviously I was awarded for the same reason. Now, very recent, you know, I went to All India Institute of Medical Science. The All India Institute of Medical Science, Mr. Stephen, is one of the best medical college entirely in the world. It's one of the best premium medical college. A lot of research and everything is there. All India Institute of Medical Science. We went over there for the same mission. Just 3 days back, I think. Yes. Right test was so tight to ventilate that we thought, why we are not able to improve this patient? Then Dr. Sharma gave me the vision that Manish, we should scope this case and let's see what is happening inside, because too much of theoretical discussions leads you nowhere. So you have to see to realize it. We scoped this patient, we discovered extremely difficult whitish, curdy, adherent lesions all over the trachea and the bronchus. So, Amit, I want you to, we can save patients from retracheal intubation, which otherwise seems to be a necessary evil in the sick of patients, which actually kills the patient. Bronchoscopy skills definitely have a learning curve, and hence, my dear friends, more centers and training for the intensivists must be inculcated. It's must. Today, in the era of evidence-based practice, you cannot spare the patients to be just on ventilator for no reasons. We are not substituting or delaying intubation. Rather, we are rationalizing every possible intubation in ICU. This is where we are different, right? We need collaboration. We don't need competition. We are not fighting with the pulmonologist or anesthesiologist. Can you go back again? Handle the presentation. You can take the presentation. I never thought they are going to like so. Actually control without oxygenation. Oxygenation without, because see, adult lung is like huge, 250 grams. Baby lung would be how much? And especially if it's on the tip to tip over to the wrong side, then spending that 1 minute to arrange tube and then put, even if I as an experienced intensivist will take 30-45 seconds, 1 minute to intubate, to get things and intubate. So I don't want to lose that time for the brain to be hypoxic. So try and use LMAs. LMAs make sense to our. Thank you. In fact, because now you have given a very good suggestion with respect to the broad concepts. That's why. Thank you. Hare Krishna.
you. So let's move to the ICU. We move to the ICU now, and we'll show two cases on bronchoscopy.